Namaskar दोस्तों, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and familiar endocrinologist. And like I said, I am trying to be fit. Welcome to Obesity Special MEDtalks. And आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 1049वां 1049th एपिसोड है। 1000 हम क्रॉस चेक कर चुके, अब हमारी जो नजर है वो 2000 वाले आंकड़े पे है और चलते रहेंगे, we'll reach there. In the meanwhile, let's have the headlines for today. The European Society of Cardiology, यूरोप की जो कार्डियोलॉजी की सोसाइटी है, they have recognized the link between heart disease and obesity. तो वो ये मानते हैं कि ओबेसिटी जो है एक डिजीज भी है और एक रिस्क फैक्टर भी है हार्ट डिजीज के लिए. Researchers have also found that the association between obesity and heart disease is more pronounced before the age of 50. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट डिजीज बढ़ेगी, मगर यंगर लोगों में इन पीपल बिलो 50 जो हार्ट डिजीज का जो पुश आता है वो ओबेसिटी से आता है. A study in India done from PGI Chandigarh shows that 44% of all women with heart disease have obesity. तो हर 5 में से 2 महिलाएं जिनको हार्ट डिजीज है वो ओबीज भी हैं. But there is good news and analysts have found out that weight loss surgery can help people with obesity manage high blood pressure. तो जब बहुत सिवियर ओबेसिटी वाले मरीज हैं, जब वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, उनका ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये इंप्रूव होता है. It is not necessary to get a surgery done in all cases. Indicated है तो ही करवाएंगे. And another study has shown that drugs such as tirzepatide and semaglutide can be used in heart disease. And the European Medicines Agency, again Europe में, they have just backed the use of Novo Nordisk's popular drug Wegovy to help ease heart failure in people with obesity. अब इस न्यूज के साथ let's go to our topic for today. आज का टॉपिक देखते हैं क्या है. The obese हार्ट और ओबेसिटी. तो हार्ट भी मोटा हो सकता है क्या? जब हम बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो फिर तो ये होता है कि दिल मेरा टूट गया, दिल आपको दे दिया. तो कभी-कभी मेरे को फीलिंग आती है कि ऐसे दिल कटोरे में डाल के दिया जा रहा है किसी को. एंड जब दिल टूटता है तो दुख भी बहुत होता है. बल्कि एक आज हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे, टूटे हुए दिल की भी कोई साइंस होती है क्या? जब दिल टूटता है, एक्चुअली उसके कड़ाके बोलते हैं. इज देयर अ डिजीज व्हिच इज नोन एज द ब्रोकन हार्ट? But in the meanwhile, we'll introduce our speaker, Professor Bhupinder Singh. Professor Bhupinder Singh is a warm welcome, sir. Good evening, everyone. Thank you, Dr. Sanjay Kalra, for inviting me here. ये एक ऐसा फोरम है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कुछ इस तरह की डिजीज की जो कि कॉमनली अंडरस्टूड नहीं है, या हम कह सकते हैं कि हार्ट के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है. बहुत लोग उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते. जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये यंग एज में स्टार्ट होती है और इसके इफेक्ट हमें लेटर एज में देखने को मिलते हैं. सो थैंक यू डॉक्टर संजय कालड़ा फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई एम ऑब्लाइज्ड टू बी हियर. वेलकम सर. एंड एट ए पर्सनल लेवल मुझे कोई कालड़ा बोले जो मेरा करेक्ट वर्ड है तो मैं तो वहीं पे फ्लैट हो जाता हूँ. तो इट्स वेरी रेयर टू सी पीपल प्रोनाउंसिंग माय नेम द राइट वे. सो थैंक यू डॉक्टर सिंह. डॉक्टर भूपेंद्र हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं कार्डियोलॉजी के एम्स बठिंडा में, और इन्होंने और इनके इंस्टीट्यूशन ने मेडिकल साइंस और मेडिकल सर्विसेज ऐसी जगह पहुंचाई जहां पे पहले अवेलेबल नहीं थी. वेरी स्टेलर academic record, and his name is so popular on PubMed and on Scopus जो हमारी इंडेक्सिंग एजेंसीज हैं. एंड डॉक्टर साहब का मेन काम जो है वो इंटरवेंशनल एंड नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दोनों में है. Dr. Bhupinder spearheads and talks about the concept of holistic cardiology and holistic health. So thank you, Dr. Singh, for your leadership. सर हमारे साथ लॉग इन हैं, आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं. सो टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे. डॉक्टर नंदलाल शारदा सर हैं, बहुत सीनियर फिजिशियन हैं अहमदाबाद से, आपको अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि टुडे डॉक्टर भूपेंद्र इज like Krishna Bhagwan for us because he is going to teach us about how to follow the right style, the right lifestyle. वो ये भी कहते हैं, डॉक्टर शारदा सर ये कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन में क्योर की बात होती है मगर प्रिवेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट. एंड जब आप होलिस्टिक कार्डियोलॉजी की बात करते हैं तो प्रिवेंशन की भी बात करते हैं क्या? ये क्वेश्चन है डॉक्टर शारदा सर का. डेफिनेटली आज जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है
अगर हम देखेंगे, इट्स लाइक टाइम बॉम्ब. All types of patients we are seeing. You start from a basic disease of hypertension, diabetes, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें, हार्ट फेलियर की बात करें, सब मतलब इस तरह से चल रहा है सिस्टम के बूम आ रखा है. तो अनटिल अनलेस हम ये प्रिवेंट कर सकें, हम इसको ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये डिजीज हमारे हेल्थ सिस्टम को ओवर पावर कर जाएंगी. सो हम जितने भी एम्स क्रिएट कर लें, जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज जनरेट कर लें, वी वोंट बी एबल टू कॉन्कर द नंबर वी आर फेसिंग. So आज की डेट में the primary aim, because our denominator of general population is huge, even if the prevalence of a disease is 10%, it is going to be a huge number. You cannot overpower that number of patients. So the primary aim in the present healthcare system has to be the primary prevention, and if possible the primordial level of prevention. So definitely the primary prevention is the aim in the present scenario. It has to be. You have to prevent hypertension. If not, you have to treat hypertension so as to prevent the complications of hypertension, which can be life threatening in the form of myocardial infarction or intracranial hemorrhage or so many other complications, which I mean, these are the two important, and there are so many other things which you may not be knowing. The general population may not be knowing that they are slowly and slowly damaging the kidney, and eventually patient goes into CKD. So you have to prevent development of hypertension, and if you really want to prevent it, it has to start from the youth. Once you cross 50, as Sir is telling, the disease is already set in, and you just have to treat hypertension. And again, we have a big challenge in front of us to treat hypertension. As we know, the only 30% of the patients are being treated or appropriately treated, or for whatever reason, is it the patient related issue or the financial issues or the physician related issues. All these things are there. So definitely the question is so valid that the answer is straightforward, that definitely the primary prevention is the goal, has to be the goal in the present healthcare system. राजेंद्र जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, एंड बिमला कपूर जी से गुड इवनिंग आ रही है. गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू यू डॉक्टर भूपेंद्र फ्रॉम डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर. 74 ईयर यंग पीडियाट्रिशियन है वेस्टर्न यूपी से, सहारनपुर से. वो ये पूछ रहे हैं कि वी आर ऑल अबव 50, दैट इज मैं बिमला जी, डॉक्टर पवार और अपनी बात करता हूँ, तो दैट मीन्स कि हम 50 के बाद मेहनत मशक्कत करनी छोड़ दें क्या, नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज एंड प्रिवेंटिंग इट्स कॉम्प्लिकेशंस, या 50 के बाद 40 के बाद हम और ज्यादा मेहनत मशक्कत करें टू सी वी प्रिवेंट द हैव, डिजीज? हाँ, ये देखो, ये ऐसी चीज है, इट नीड्स अ कॉन्टिन्यूस एफर्ट. इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि यू स्टार्ट एट वन पॉइंट इन टाइम एंड यू कंटिन्यू फॉर फ्यू इयर्स एंड देन यू स्टॉप इट एंड द बेनिफिट goes on like that. It has to be continuous, consistent lifestyle modification. You really don't need to do a very stringent lifestyle modification. Very simple things matter in life, in the form of balanced diet. I will not go into detail of those things, but yes, a simple balanced diet, avoiding the canned food, and simple aspects. Whatever is prepared at home is fairly good enough to be called as balanced diet, right? And then if you add some physical activity to it, it could be, it could be tailor made according to the person who wants to do the physical activity. You may just be doing a brisk walk, you may be doing a little jogging, or you may be cycling, you may be swimming, according to the, so you can tailor made those type of activities, and it has to be continuous process. Whenever you start reversing your disease process, or you start reversing your the intensity of your risk factors, तो इस तरह से आप उसको कॉन्कर कर पाते हैं. इट हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. किसी भी एज में स्टार्ट करें, it is definitely better to start at the early age, because you prevent the development of some of the things. But it's okay if you have not started yet. You start, suppose you are hypertensive, if you start doing lifestyle and the physical activity, then you can have you may not need medication to start for the management of hypertension. So, or you may need just a minimal dose of hypertensive therapy to achieve the goal. So that's how the benefit will continue to be there whenever you want to start. Is it the early age or later age? It doesn't really matter. And definitely the amount of physical activity and the type of physical activity can be chosen by the person who wants to do that.
ये तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट आ रही है कि एक्चुअली जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे अपने हाथों में है, हमारी सेहत भी अपने हाथों में है। कई बार डॉक्टर भूपिंदर लोग आते हैं ओपीडी में और कहते हैं बहुत ही फेटलिस्टिक वे में कि ये जो ब्लड प्रेशर या हार्ट की बीमारी या ओबेसिटी, आज का हमारा टॉक द ओबीज हार्ट है, ये मुझे विरासत की वजह से मिला है या वातावरण की वजह से। विरासत मतलब जेनेटिक्स की वजह से, या वातावरण, मैं ऐसे माहौल में रहता हूँ, मैं ऐसे माहौल में रहती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं विधि का विधान नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकती। आई कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, आई कैन नॉट चेंज माय आउटकम्स। मगर जो डॉक्टर भूपेंद्र कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आपके अपने हाथ में है। आपका व्यंजन, वी फॉर व्यंजन या व से व्यंजन, व से व्यायाम, तो 2 व हो गए। 2 और व्य वो है हमारा व्यवहार, हम बिहेव कैसे करते हैं, और हमारी व्याकुलता, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारे व्याकुल विचार या अव्याकुल विचार, दैट इज़ आल्सो इन आवर हैंड्स। तो व्यंजन और व्यायाम एक कोटा हुआ। दूसरा हुआ व्याकुलता और व्यवहार टुगेदर, एंड तीसरा हुआ बहुत ही सिंपल, वैद्य अनुपालन। तो मेरे ख्याल अगर हम प्रोफेसर साहब का के कहे का अनुपालन करें, कहना माने, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बिकम मच हेल्थियर। डॉक्टर पवार सर पूछते हैं, सर आपने टॉपिक ये क्यों चुना, द ओबीज हार्ट? You have been in practice now and as a student for more than 2.5 decades. The average weight, the weight of the average patient who would be wheeled into your cath lab or your ICU when you were doing MD medicine in Jodhpur, or when you were doing DM cardiology in Bangalore, तब कितना वजन था महिलाओं का, पुरुषों का, और अब कितना है जो आपकी एवरेज ओपीडी में, आईसीयू और कैथ लैब में जो एवरेज मरीज आता है, कितना फर्क पड़ गया है सर? देखो, इनिशियली मैंने एमडी जब जोधपुर से की 2005, बिटवीन 2005 टू 2008 तक, उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा वेट इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन आल्सो। सो आई मे नॉट बी एबल टू डायरेक्टली कंपेयर कि भी पहले मैं राजस्थान में एमडी कर रहा था, बट वहाँ पे एवरेज वेट लगभग लगभग आप बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वर टू द ट्यून ऑफ 60s और समथिंग। आज की डेट में जब मैं ओपीडी में बैठ रहा हूँ, जो पेशेंट यंग नहीं है, मान लो लेस देन 45 को हम छोड़ दें, दे मे नॉट बी ओबीज, बट अगर हम 60 प्लस की बात करते हैं और हमारे पास सांस के पेशेंट्स आते हैं, तो उनका एवरेज वेट लगभग लगभग 70 प्लस, समटाइम टचिंग 80 ऑल्सो। सो वेट इज वन ऑफ द पैरामीटर। सो जो की चीज आज हम डिस्कस करना चाहते हैं, ओबेसिटी, इज इट जस्ट द वेट और देयर आर सम अदर पैरामीटर्स आल्सो? क्या हम वेट मेजर करते हैं, क्या हम बीएमआई मेजर करते हैं, उसी के बेसिस पे सारी डिजीज प्रोसेस है, या फिर कुछ और पैरामीटर्स भी हैं जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजीज प्रोसेस के लिए? सो डेफिनेटली ओवर फ्यू आई मीन ओवर लास्ट 10 to 20 years down the line, the weights of the average weight of the patient has definitely increased. So that is directly proportional to the what the studies in India or the international levels are telling us, that the obesity is going to be a major disease, because it's a risk factor for both the multiple things. राइट, सो दैट पॉइंट इज वेल टेकन। डॉक्टर विपिन शर्मा सर भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर विपिन इज रिटायर्ड सिविल सर्जन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड अ वेरी एक्टिव एंथुजियास्ट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एजुकेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। डॉक्टर नंदलाल शारदा सर पॉइंट आउट करते हैं कि किंग्स की भी हेरिडिटी खत्म हो गई, तो जो था कि विरासत में या जो चीज मिली है, तो किंगशिप भी, मोनार्की अब खत्म हो गई इंडिया में एंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जब वो चेंज हो सकता है, तो आप भी अपने जीन से लड़ सकते हैं। यू डोंट हैव टू ब्लेम योर जीन्स फॉर एवरीथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग। रामजी अग्रवाल जी दिमाग का क्वेश्चन पूछते हैं, उसको बाद में लेते हैं। क्या मोटे होने से दिमाग भी कमजोर हो जाता है? एक्चुअली द आंसर सर इज यस, डिमेंशिया जल्दी होता है। जो डिमेंशिया की हिंदी है, नॉट वेरी प्लेजेंट, बट कि कोई सठिया जाए या सतरा जाए, दैट एक्चुअली हैपेंस अर्लियर इन पीपल विद ओबेसिटी, एंड रीजंस उसके काफी सिमिलर हैं जो हार्ट के तरफ से आते हैं। बिल्कुल। रेखा पिटारा जी भी आपको और डॉक्टर शशि खरे गुड इवनिंग कर रहे हैं, और वो पूछे, सर योर टॉपिक इज द ओबीज हार्ट, सो लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट। हार्ट जो है वो होमोजीनस एक ही चीज है, या उसमें बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग ब्लड वेसल्स, अलग मसल्स? हार्ट की शक्ल कैसी होती है, कैसा दिखता है आपको हार्ट? तो देखिए, ऐसा है कि हार्ट एक बेसिकली इट्स लाइक ए कैविटी।
सो जिसमें ब्लड की पंपिंग होनी है, एंड वो ब्लड जब पंप करेगा तो इट विल गो टू रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू मेजर ब्लड वेसल्स। सो अगर हम हार्ट की कैविटी की बात करें, अगर हम उसको बाहर से स्टार्ट करें, तो एक लेयर आती है जो कि थिन पेपरी लेयर की जैसे बिहेव करती है, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो पेरिकार्डियम एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। उसके बाद इसके बीच में थोड़ा पेरिकार्डियल फ्लूइड आता है जो इसको लुब्रिकेशन देता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की, तो उसके सराउंडिंग वी हैव दीज टू लेयर्स विद इन बिटवीन pericardial fluid, which will help in lubricating and appropriate contraction without much of the friction. It will help in that. उसके बाद पेरिकार्डियम के अंदर चले जाएंगे तो एंडो मायोकार्डियम आ जाएगा, जिसमें मसल लेयर है, थिक मसल आता है। सो अकॉर्डिंग टू द मसल देयर आर वेरियस डिजीज। अगर मोटा हो गया, थिकनेस बढ़ गई है, या बिल्कुल थिन हो गया, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। सो मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट का मेन फंक्शन है पंपिंग। इट विल जनरेट द प्रेशर to eject the blood from ventricle to the greater blood vessels. तो ये दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द मसल ऑफ द हार्ट। उसके नेक्स्ट लेवल पे, थर्ड लेयर पे जाएंगे तो एंडोकार्डियम आ जाती है। एंडोकार्डियम अगेन एक कैविटी का इनर मोस्ट पार्ट है। इट इज ए ग्लिसनिंग थिन, जिसमें ब्लड कनेक्शन में होता है, जिसके इमीडिएट कांटेक्ट में ब्लड होता है। तो इट शुड बी ए स्मूथ थिंग, जिसमें इजी फ्लोइंग हो। यू कैन इमेजिन इट हैज टू बी स्लिपरी सॉर्ट ऑफ ए थिंग। सो जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो उसके इंटरनल लेयर, जो कि एंडोथेलियल लेयर बोल देते हैं, इट हैज टू बी सो वो थिन और ग्लिसनिंग होनी चाहिए और स्लिपरी होनी चाहिए। उसमें अगर डैमेज हो जाता है तो वेल्व्स में डैमेज आ जाता है, थ्रोम्बस बनने शुरू हो जाते हैं कैविटी में, तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ये तो हो गया हार्ट। तो इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि हार्ट के नेक्स्ट में वेसल्स आ जाती हैं। इसमें एक बड़ी वेसल का नाम एओर्टा है, और एक दूसरी जो लंग्स को लेके जाती है, डीऑक्सीनेटेड, या आप बोल दे कम ऑक्सीजन वाला खून, वो पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, वेसल्स आ जाती हैं और ये हार्ट आ जाता है, जो कि कैविटी की शेप में है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। मेन 2 चैम्बर्स हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल आता है। सो दीज आर द 3 लेयर्स। ये 3 लेयर्स ही हैं जिसके अलग अलग डिजीजेज हैं, और अकॉर्डिंगली हमें सिम्टम्स आते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिसको हमें सेव करना है, जिसको हमें प्रिवेंट करना है। तो हार्ट ये हुआ पंप की तरह, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, और ये पंप लगातार चलता रहता है ना सर, थ्रू आउट लाइफ? यस। सो इसकी जो बेसिकली जिसको हम हार्ट रेट बोल देते हैं, कि पर मिनट कितना कंट्रैक्शन करेगा। सो हर मिनट में जो हार्ट की नॉर्मल रेट ऑफ कंट्रैक्शन है, कि 1 मिनट में ये 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक कंट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर 60 भी है किसी का तो वो भी नॉर्मल है। 70, 80, 90, 100, अप टू 100 बीट्स पर मिनट के लेवल पे ये इतने रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हर कंट्रैक्शन में ये ब्लड इजेक्ट करता है, जो कि सारे शरीर को जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देता है, ब्रेन को देता है, किडनी को देता है, बाजुओं को देता है। अपने every system of the body will receive blood, which is a fresh blood or oxygenated blood through the pumping capacity of the heart. So main function of the heart is to pump the blood, the oxygenated blood. So डेफिनेटली ये इनके ये इसका फंक्शन है। और ये इस बीट से 60 से नीचे चला जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि लो हार्ट रेट है, या 100 से ज्यादा चला जाता है। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फिगर है कि 60 से नीचे ही जाएगा तो हम उसको, अगर किसी का नॉर्मली 80-90 चल रहा है तो उसके लिए 60 भी थोड़ा कम है। अगर किसी का नॉर्मली 60 चलता है थ्रू आउट, हम जब भी देखें, और किसी दिन उसका 80 हो गया तो वो उसके लिए अब नॉर्मल है। सो इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मतलब इसमें कट ऑफ जरूर बने हुए हैं कि 60 से नीचे या 100 से ऊपर हम उसको अब नॉर्मल मानेंगे। बट ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें धड़कन तेज लगती है, तो उसके लिए कई बार 80 भी तेज होती है। तो समटाइम वी ट्रीट दोज थिंग्स इस तरह से। डॉक्टर योगेश उपलेश्वर जी सेंड्स यू अ वेरी गुड इवनिंग। एंड ये आपने सही कहा कि हार्ट के बगैर तो जिंदगी नहीं रह सकती। वी नीड द हार्ट, वी नीड द हार्ट टू गिव अस ब्लड, टू गिव अस ऑक्सीजन। बट एक कमेंट आ रहा है फ्रॉम डॉक्टर सुनीत वर्मा फ्रॉम पंचकुला। वो कह रहे हैं हार्ट का एक और एम भी है और काम है लाइफ में। यदि दिल ना होता तो बॉलीवुड इंडस्ट्री ना होती। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री भी दिल के आसपास ही घूमती रहती है। बिल्कुल सही है।
एंड इफ वी बिल्कुल कैन सही। गो ऑफ ट्रैक फॉर 2 मिनट्स, डॉक्टर भूपेंद्र, बिफोर यू केम हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। जैसे बॉलीवुड में मूवी आएगी कि मैंने दिल दिया और मेरा दिल टूट गया, तो एक्चुअली ऐसी कोई कार्डियोमायोपैथी है जिसमें आपको दिखता है कि दिल टूट जाता है? सो कैन बिल्कुल। यू जस्ट टॉक अबाउट दैट, दो दिस इज ऑफ टॉपिक। सो मैं एक स्टोरी इसको इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं ये अभी 3-4 साल पुरानी बात है। मैं कैथ लैब में प्रोसीजर कर रहा था। पेशेंट आया हमारे पास, लगभग 50 इयर्स ओल्ड फीमेल। तो अब रेजिडेंट ने देखा, उसको ईसीजी में चेंजेस थे, एमआई जैसे चेंजेस आ गए, उसके ब्लड कार्डियक एंजाइम्स ट्रोपोनिन पॉजिटिव आ गए। सो एवरीबडी थॉट कि ये एमआई है, इसको एंजियोग्राफी करेंगे और फिर उसके बाद वी विल ट्रीट द पेशेंट। सो 50 ईयर ओल्ड फीमेल, पोस्ट मीनोपॉजल एज है। तो वो पेशेंट, मैं उसकी एंजियोग्राफी कर रहा था, तो एंजियो किया तो मैं सरप्राइजिंगली एंजियोग्राफी वाज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्लीन वेसल्स, नो प्लाक, नो एथरोस्क्लेरोसिस, नो थ्रोम्बस, नथिंग। सो मैंने आई मीन हमने देखे हुए थे केसेस, है ना। इको में भी इजेक्शन फ्रैक्शन वाज अबाउट 30%। समबडी हैज डन द इको। सो आई वाज इन द कैथ लैब। सो मैंने टेबल पे ही उससे डिस्कस किया, तो आई हैड एन आइडिया कि ये कुछ अलग चीज है, ये हार्ट अटैक नहीं है। तो मैंने ड्यूरिंग एंजियोग्राफी जब मुझे पता लग गया ये हार्ट अटैक नहीं था, तो मैंने उससे डिस्कस किया समथिंग। सो मैंने कहा कोई टेंशन चल रही थी क्या लाइफ में? शी टोल्ड कि मैं टीचर थी स्कूल में, मैं टीचर हूँ प्रेजेंटली। तो मेरी एक जूनियर टीचर है, तो मैं सीनियर टीचर हूँ, तो हमारे प्रिंसिपल की पोस्ट आई है, तो उसमें हमारे मेरे जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया गया। सो शी हैड दैट ट्रॉमा इन हर माइंड कि मेरे जूनियर को प्रिंसिपल बना दिया, जबकि मैं डिजर्व करती थी, मैं सीनियर थी, तो मुझे प्रिंसिपल नहीं बनाया गया। तो जस्ट टू कट शॉर्ट दिस, so she had that trauma in the mind, and that trauma led on to that cardiomyopathy, which is exactly what Dr. Sanjay Kalra was telling, that it is called as broken heart syndrome. So the heart is broken because of the mental stress. So the pathophysiology goes like that. There is acute stress in the, so typically present in a post-menopausal female. So she was 50s female, post-menopausal, with a stress which she took to her heart, with a mind, with excessive release of norepinephrine, catecholamine stress, led on to the myocardial damage, producing changes in the ECG in the form of ST elevation. And because there was myocardial injury, so cardiac enzymes were raised. So everything was fitting into ST elevation MI with LV dysfunction, but the coronary angiography was normal. So this is the typical garden variety of what is called as the broken heart syndrome. ये जो So ब्रोकन we हार्ट must सिंड्रोम है, understand. या एंड टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी इसका दूसरा नाम है। Yes. टाकोत्सुबो इज अ जापानीज नेम, बट एक्चुअली जो पहला डॉक्यूमेंटेड केस है ऑफ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम वो इंडिया से आया। एंड आजकल दिवाली दुशहरे वाला टाइम चल रहा है, सो इट्स अ हैप्पी टाइम, बट वी शुड रिमेम्बर कि जो दशरथ थे, जो भगवान राम के पिताजी थे, जब राम को वनवास में भेजा गया तो ही डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। जब आप रामायण पढ़ते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन दिखाई देती है उनकी, दैट इज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम. So actually, Lord Dashrath died. King Dashrath died not maybe because of an MI, but probably because of a broken heart. जो temporal profile है उनकी बीमारी की 2-3 दिन की, that does not match with an acute MI. It matches more with Takotsubo cardiomyopathy. उस टाइम हमारे कार्डियोलॉजी वाले नहीं थे, डॉक्टर सिंह भी नहीं थे, so maybe that is why we were not able to save. But we come back to our topic, the obese heart. तो डॉक्टर साहब आपने बात की about the heart being like a pump. तो बाहर से शुरू करते हैं। आपने बात की थी पेरिकार्डियम एपिकार्डियम की, तो ओबेसिटी में इस एरिया में कोई फर्क पड़ता है क्या? कैन यू लुक एट द हार्ट एंड रिकॉग्नाइज कि ये ओबीज आदमी का या ओबीज महिला का हार्ट है? ऐसा है कि जो ओबेसिटी है, एक ऐसी सिनेरियो है जिसमें फैट डेपोजिशन हो जाती है। सो फैट डेपोजिशन इज एक तो जो चीज हमें दिख रही है बाहर से कि एक द पर्सन इज ओबीस, वेट इज मोर, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं बीएमआई। इसके अलावा मोर टू दिस इज द विसरल ओबेसिटी, एडिपोसिटी, जिसमें के अराउंड द विसरा यू हैव द कलेक्शन ऑफ फैट। सो हमारे हार्ट में पेरिकार्डियम है, सो यू हैव एपिकार्डियल फैट कलेक्शन, you have the collection on the pericardium of the heart. So you can visualize that thickness of fat surrounding that area. So you just imagine
कि जो एक लेयर सराउंड कर रही है हार्ट को, अब वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई है फैट की वजह से. So that has some impact on the functioning of the heart, not directly the muscle of the heart, because muscle is a strong tissue. It will not be affected much by this thin layer of fat. But the other side, you have the low pressure chambers like left atrium, the right atrium, where the normal pressure is to the tune of 2 to 8 millimeter of mercury. In the left ventricle, you have pressure to the tune of, you have systolic pressure of about 120, you have diastolic to the tune of 0 to 8. So you have a high systolic pressure chambers, like left ventriculars are high pressure chambers and atrias are low pressure chambers. So something which is compressing from outside, encasing from outside in the form of fat surrounding the pericardial layer, so that can have some mechanical effect on these chambers. So yes, the fat can be can surround the heart in these layers, so thereby producing, so we might be discussing the complications which will be occurring in the later part of our discussion. So yes, the fat surrounds the heart, which can be measured by cardiac MRI. It can give us some idea. CT also to some extent can tell, but cardiac MRI will be a better modality to see if we really want to see what thickness of fat is surrounding the heart, the pericardium of the heart. एंड बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने पंप की बात की, कोई भी आपके पास पंप है, कोई मशीन है, उसके आसपास काई जम जाए, मिट्टी जम जाए, गंद पड़ जाए, तो ऑब्वियसली पंप की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी. तो फैट को वैसे ही समझें, चर्बी को, जैसे काई जम गई, स्लाइम जम गया अराउंड द हार्ट, एंड देन द हार्ट्स एफिशिएंसी विल गो डाउन सर्टेनली. कमिंग टू द मायोकार्डियम, जो मसल है हार्ट की आपने बात की, तो सर मसल को क्या होता है, हाउ डू यू इन, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल लॉग्ड इन टुडे, कैन यू एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, हम मसल का स्ट्रक्चर और मसल का फंक्शन पहले तो कैसे नापते हैं कार्डियोलॉजी में, व्हाट आर द सिंपल वेज, और फिर उसके बाद इस मसल स्ट्रक्चर और मसल फंक्शन को क्या होता है ओबेसिटी में? Yes, so this is the most important component which should be discussed in detail, a little detail. I'll go into this. So जो हार्ट का मसल है जिसका मेन फंक्शन पंपिंग है, सो पंपिंग हम कैसे मेजर करते हैं? सो वी कैलकुलेट द पंपिंग और द फंक्शन ऑफ द हार्ट और द पंपिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ट और द फंक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल स्पेसिफिकली और एनी वेंट्रिकल. We can do, I mean, echocardiography. So that's basically a ultrasound Doppler imaging of the heart, जिसमें हम ये देखते हैं कि हार्ट की कंट्रैक्शन कितनी हो रही है. सो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने के लिए कितना वॉल्यूम इट विल इजेक्ट, अकॉर्डिंगली उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन मेजर कर सकते हैं. सो सब मेजर जो पैरामीटर है हमारा इकोकार्डियोग्राफी वाइज फंक्शन ऑफ द हार्ट देखने के लिए, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है. ये तो सिस्टोलिक फंक्शन हो गया. जैसे सिस्टोलिक फेज, एक हार्ट की कार्डिक साइकिल में दो फेजेस आती हैं, एक सिस्टोलिक फेज है, एक डायस्टोलिक फेज है. सिस्टोलिक फेज इज समथिंग हार्ट ने रिलैक्स किया, नाउ इट इज गोइंग टू इजेक्ट, इट इज गोइंग टू contract. So that's contraction is called the systolic phase of the heart. जब it has to receive, obviously एक बार contract किया तो it has to relax. So once the heart has to relax, so it has to accept blood from the atrium to the ventricle. So jab it has to accept, so it has to be compliant enough to receive the blood. So this is called the diastolic phase, and this is called the diastolic property of the heart. So we have two types of properties of the heart. One is the systolic, which is the contraction of the heart, and the diastolic, which is the relaxation property of the heart. So we have some echo parameters for the relax to measure the relaxation of the heart, which is called the which we broadly say as the diastology of the heart, by various parameters on echo. So more or less everybody knows the left ventricular ejection fraction has to be, if it is less than 50%, it is reduced, it is low. More than 50%, it is a normal ejection fraction. And then you have further divisions of reduced ejection fraction, mildly reduced ejection fraction, or preserved ejection fraction. Thereby you divide heart failure asymptomatic patient coming to you into any of these three category: reduced, mildly reduced, or preserved ejection fraction. ये तो एक मायोकार्डियम है. So back to question again कि obesity इसको कैसे affect कर सकती है. So muscle fibrils हैं, 5 myocytes हैं. So first of all उसमें भी adiposity, जो चीज वहां पे कलेक्ट होती है within the stroma, in between the muscle fibers, you can have a collection of fat which can be
problematic in it may not affect the contraction, but it will not allow the heart to relax. So इनिशियल फेज ऑफ जो हार्ट इन्वॉल्वमेंट होती है मसल में, वो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, रिलैक्सेशन एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि उसको पंपिंग तो नॉर्मल है, कंट्रैक्शन तो नॉर्मल है, बट वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जिसको हम हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन बोल देते हैं कि जिस इस पेशेंट की डायस्टोलॉजी अफेक्टेड है। तो अगर उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे एंड ओबेसिटी ट्रीट नहीं करेंगे, ओबेसिटी के जो एडिशनल चेंजेस है जो हार्ट में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई इट इंक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम इनिशियली एंड देन सब्सिक्वेंटली डिक्रीजेस द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये टेकिकार्डिया प्रोड्यूस करता है, ये सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन को प्रोपेंसिटी होती है इसकी, एंड इवेंचुअली ओबेसिटी एक अपने आप में ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि बाकी रिस्क फैक्टर्स को जनरेट करता है, जैसे कि मैंने बताया कि ओबेसिटी डायरेक्टली मायोकार्डियम को इफेक्ट कर रही है, और इनडायरेक्टली ये इफेक्ट कर रही है थ्रू डायबिटीज इंक्रीज हो रही है, हाइपरटेंशन अनकंट्रोल हो रहा है, एंड दोज पैरामीटर्स then will lead on to these the damage on the myocardium of the heart because of hyperglycemia or uncontrolled hypertension. So जो obesity है, we say that कि ये direct it affects the heart directly also and indirectly by increasing the other risk factors which are the risk factor for the myocardial dysfunction. So अगर वो चीज uncontrolled और later on लेटर फेज में चली जाए, देन उसकी पंपिंग भी, कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट वो भी इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसको हम बोल देते हैं कि भाई हाँ अब नाउ द पेशेंट इज इन द रिड्यूस्ड इजेक्शन फेज, उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 50% हो गई या लेस देन 40% हो गई, तो वो उसकी कैटेगरी ऑफ हार्ट फेलियर क्लासिफिकेशन वेरी कर जाएगी। पहले वो हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन था, अब वो हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस्ड और रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में चला गया, because we did not bother to treat other risk factor, we did not bother to treat obesity, the weight and the risk factors, the hypertension, the hyperglycemia, all these parameters will adversely affect the myocardium, and initially with normal ejection fraction, later on with reduced ejection fraction. So that's how obesity can directly or indirectly has a major effect on the myocardium of the heart, leading on to heart failure. And heart failure is a very a very morbid disease. You will have multiple admissions in the ICUs, in the hospital. You need to have more visits to that. So you really need to control obesity and the risk factor to treat heart failure with preserved ejection fraction. तो डायरेक्ट इफेक्ट भी है ओबेसिटी का, एंड वी कॉल इट ओबेसिटी कार्डियोमायोपैथी, एंड इनडायरेक्ट भी है थ्रू द अदर रिस्क फैक्टर्स लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मे बी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। और अगर हम हार्ट को देखें गुब्बारे की तरह या एक आप प्लास्टिक की बोतल की तरह देख लें, जो लचक है वो कम हो जाती है हार्ट की शुरू में, दैट इज डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, हार्ट एक्सपैंड नहीं कर पाता, और उसके बाद हार्ट कंट्रैक्ट भी नहीं कर पाता, दैट इज सिस्टोलिक डिस्फंक्शन। Again, going off topic, Dr. Yogesh has a question, sir. What is the treatment for broken heart syndrome? So basically, broken heart syndrome is considered to be a reversible disease. So you just treat the patient on a conservative. So patient has come to you with LV dysfunction and you suspected MI and it is not there. So basically, you are left with LV dysfunction and heart failure. So you just have to treat this patient as heart failure with reduced ejection fraction, and there are high chances that patient is likely to recover in terms of ejection fraction over a period of say 10 to 14 days. So most of the patient, it has got a very good prognosis. 70 to 80% of the patient will have improvement of ejection fraction, which eventually normalizes. So some of the patient will continue to remain in the heart failure, or they will have a recovery at the later part of the, later stages also. But more or less 70 to 80% of the patient, they will have recovery in the ejection fraction. So it has got good prognosis. You just treat the patient as you treat any heart failure with reduced ejection fraction patient. And along with that, something which Dr. Singh, Professor Singh has spearheaded in the cardiology community, this is what he terms as psychological first aid. तो जब आप बात कर रहे हैं, आप लेट अस से कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के साथ मरीज आया, फर्स्ट एड देते हैं, एस्पिरिन देते हैं, सॉर्बिट्रेट देते हैं, मरीज को दाखिल करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड. Along with that, psychological first aid, a few words to relax the patient. And I think that is what he did for that lady who had come to him.
And with the psychological first aid, all he did was to hear her out, and she improved with that. So that is also something that should be part and parcel of our treatment. And thank you, Professor Singh, for spearheading this aspect of holistic cardiology and psychological first aid in your work as well. So we've talked about the outer lining of the heart, and then we talked about the muscle myocardium. जो डॉक्टर सिंह ने बोला कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ओबेसिटी कार्डियोमायोपैथी की, पर मसल के बीच में भी और चीजें हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं नसें, नस, दैट कैन मीन कॉर्नरी आर्टरी। तो कॉर्नरी आर्टरीज को जो बड़ी वाली हैं, जो छोटी वाली हैं, इनको क्या होता है इन ओबेसिटी? इसमें जब हम ब्लड सप्लाई की, अब हार्ट की अपनी सप्लाई भी होनी चाहिए, सो जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं। कॉर्नरी आर्टरीज छोटी छोटी 3 to 4 मिलीमीटर वेसल्स होती हैं, जो कि एओर्टा की जस्ट अबव द एओर्टिक वेल वहाँ से निकल के इट सप्लाइज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट। So we have left anterior descending artery, left circumflex artery, and the right coronary artery. So accordingly, it supplies the whole myocardium of the heart. सो इसमें एक तो इसको कंडक्टेंस वेसल्स बोल देते हैं, जिसको एपिकार्डियल वेसल्स बोल देते हैं। ये बड़ी वेसल्स आती हैं जो कि टू द ट्यून ऑफ 3 to 5 मिलीमीटर, समटाइम इट टेपर्स डाउन टू 2 मिलीमीटर ऑल्सो, जैसे जैसे ये एपेक्स को जाएंगी। उसके बाद रेजिस्टेंस वेसल्स आ जाती हैं आपकी, जो कि लेस देन 500 माइक्रोमीटर डायमीटर आ जाती हैं। सो दीज आर रेजिस्टेंट वेसल, जिसमें रेजिस्टेंस होती है। तो दो तरह की प्रॉब्लम ये ओबेसिटी क्रिएट करता है। एक तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ओबेसिटी डायरेक्टली कॉजेज डिसलिपिडीमिया, डायरेक्ट इफेक्ट्स, and it increases the oxidative stress, so thereby it increases accelerate the atherosclerosis. Second, indirectly through hypertension, through diabetes, through hyperglycemia, it increases the atherosclerosis. So जो हमारी एपिकार्डियल वेसल्स है जिसमें प्लाक फॉर्मेशन होनी है, सो इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्नी आर्टरी डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्नी आर्टरी डिजीज। ये तो बिग वेसल, बिग डायमीटर वेसल्स हो गई जो एपिकार्डियल वेसल है। सो दैट कैन प्रोड्यूस symptoms of angina, and patient can come to you with the acute myocardial infarction or non-ST elevation MI, technically going into detail. So various spectrum of coronary artery disease से patient can present if the patient is having atherosclerotic, obstructive or non-obstructive coronary artery disease, which involves primarily the एपिकार्डियल वेसल्स। अगर हम डीप डाउन इसकी ब्रांचेस में चले जाएंगे, देयर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोथेलियल डिसफंक्शन, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विद नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज। सो हम क्या देख सकते हैं? नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज मतलब एपिकार्डियल आर्टरीज। हम पेशेंट को एक पेशेंट, सपोज अ पेशेंट कम्स टू अस विद एंजाइना, डॉक्टर साहब मेरे को पिछले 5-6 महीने से, साल से जब मैं चलता हूँ तो पेशेंट टिपिकली बता रहा है कि मुझे चलने पे, एक्सर्शन पे एंजाइना होता है, मैं रुकता हूँ तो मुझे एंजाइना नहीं होता है। तो एवरीबडी, वी आर ऑलमोस्ट श्योर कि इस पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्नी आर्टरी डिजीज, एपिकार्डियल डिजीज होनी चाहिए। सो वी सब्जेक्ट दैट पेशेंट टू एंजियोग्राफी एंड वी फाइंड दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। सो फ्रॉम वेयर दिस पेशेंट इज हैविंग एंजाइना, सो देयर कम्स द रोल ऑफ endothelial dysfunction, that is microvascular angina or coronary microvascular dysfunction, CMD we say that. So जिसमें obesity directly or indirectly it affects the endothelial function of the heart, vasoconstriction at various neurohormonal level. There is a dysfunction of endothelium and microvascular dysfunction which we cannot see on coronary angiography. So it has got, so this particular angina which is without obstruction is called microvascular dysfunction leading on to angina, and this has to be treated by medical management. And definitely, as because it is dominantly linked with obesity also, you reduce the weight, you give reassurance. There comes the role of meditation, yoga as well, because it affects the autonomic dysfunction function of the heart. So we have two ways of involvement of the blood vessel. One is direct involvement, atherosclerosis. Second is through the endothelial dysfunction in the microvessels of the heart. So, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से रेज किया कि ओबेसिटी डायरेक्टली एंड अगेन इनडायरेक्टली ऑल्सो ये हार्ट वेसल्स को भी तंग कर सकती है। जो बड़ी वेसल्स हैं वो एंजियोग्राफी में दिखती हैं, जो कॉर्नरी धमनियां हैं, और जो पतली वेसल्स हैं वो कई बार दिखाई नहीं देती, दैट इज माइक्रोवेस्कुलेचर। अब आयुर्वेद में जो लफ्ज है शीरा, दैट इज यूज्ड फॉर veins. It is also used by some people for thin vessels, which can be capillaries or which can be the microvasculature.
एंड दोनों पे इम्पैक्ट आ सकता है ओबेसिटी का। बेसिकली समझाने के लिए, एंड डॉक्टर योगेश ऑल्सो सेज इट्स नाइस दैट वी आर एबल टू एक्सप्लेन these very difficult concepts, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स टू आवर पेशेंट्स इन सिंपल वर्ड्स। तो मरीज को बस ये समझाना है कि अगर काई जम गई आपकी खून की नसों में, काई जो है वो चर्बी हो सकती है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल और फैट, शुगर हो सकती है, शक्कर हो सकती है, या तंबाकू भी हो सकता है। तो यू इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ केयर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ऑल्सो। तो कुछ भी ये जम जाए, जो काई है दैट इज चर्बी, शुगर या तंबाकू, लचक कम हो जाए खून की नसों की, तो खून की नसें जो है वो सप्लाई नहीं कर पाएंगी ब्लड मायोकार्डियम को, एंड ऑब्वियसली मायोकार्डियम कमजोर हो जाएगा अगर उसको खुराक नहीं मिलेगी तो। विनायक शर्मा जी एंड अली नजाकत साहब हैव आल्सो जॉइंड द डिस्कशन। डॉक्टर नंदलाल शारदा फिर ऑफ ट्रैक ले रहे हैं, बट वो सवाल पूछ रहे हैं, सर इन मॉडर्न कार्डियोलॉजी प्रिवेंटिव एंड थेरेप्यूटिक, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉर्बिट्रेट? एंड आई थिंक दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग टू अस। कार्डियक फर्स्ट एड सर। सो सॉर्बिट्रेट बेसिकली एक ऐसी ड्रग है जो कि वेजोडाइलेट, इट्स ए वेजोडाइलेटरी ड्रग, जो कि जब हम सबलिंगुअली लेते हैं तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में जाऊं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास कर जाती है, डायरेक्टली एंटर्स द ब्लड। सो इट डज नॉट हैव टू बी इंजेस्टेड थ्रू द लिवर, देन इट गोज टू द ब्लड टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। सो वी वांट कि ये इमीडिएटली एक्ट करे, तो हम इसको सबलिंगुअली लेते हैं। 5 मिलीग्राम की टैबलेट है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। सो इसको जब हम रखते हैं तो इट विल रीच टू द ब्लड सर्कुलेशन, रीच टू द कॉर्नरी आर्टरीज, एंड इट कॉज वेजोडाइलेटेशन। सो अगर किसी पेशेंट को वेजोस्पास्टिक एंजाइना है, मान लो किसी भी पेशेंट को एंजाइना हुआ, चेस्ट पेन हुई उसको, तो ये तो पता नहीं है कि किस तरह का एंजाइना क्यों हो रहा है। तो अगर किसी भी पेशेंट को एंजाइना है, सीवियर चेस्ट पेन है, रेडिएशन टू बाइलेटरल अपर लिम्ब और लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा है, या जॉ जॉ तक पेन कर रहा है, और कई बार पेशेंट को जस्ट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, कई बार चेस्ट पेन होती ही नहीं है माइकार्डियल इन्फार्क्शन में। सो पेशेंट विल जस्ट हैव सफोकेशन और कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ पेन और हैवीनेस ऑफ द चेस्ट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि चेस्ट पेन या हम एंजाइना को के लिए कमेंट करते हैं। अगर ऐसी चीज है तो अगर सॉर्बिट्रेट किसी फॉर वट एवर रीजन अगर कहीं पे पड़ी हुई है, तो ये सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख सकते हैं। उससे हमें ये पता लगेगा जो भी चीज चल रही है कि वो क्या वो एंजाइना था कि नहीं है। अगर सॉर्बिट्रेट लेने के विद इन 30 सेकेंड उसको रिलीफ हो जाए तो वी आर श्योर। ये एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट है। आप डॉक्टर साहब को भी आगे जाके बता सकते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ था, मैंने ये सॉर्बिट्रेट ली और मेरे को ठीक हो गया। सो ये हम एक तरह का डायग्नोस्टिक टेस्ट मानते हैं, ये पूछने ये समझने के लिए कि जो भी पेशेंट को उस टाइम पे, जो जब वो आपके सामने नहीं था, उसको हुआ था तो वो एंजाइना था, तो वो हार्ट का इशू था। अगर उसके लेने से सिम्टम रिलीव नहीं होता है तो थोड़े चांसेस कम है कि वो एंजाइना हो या माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये लेना है आपको तो यू शुड सिट, क्योंकि ये बीपी डाउन करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वेजोडाइलेटरी ड्रग है, एकदम वेजोडाइलेट करेगी, और आपका बीपी अगर 110 की रेंज में चल रहा है तो ये दो एटलीस्ट 10 to 20 मिलीमीटर डाउन कर देगी। सो 100 से 80 में आ जाएगा। तो अगर आप खड़े खड़े इस ड्रग को जीभ के नीचे रखेंगे तो आपको चक्कर आने के जाए। सो हम हमेशा इस चीज को एडवाइस करते हैं, सॉर्बिट्रेट है ये आपको इमरजेंसी में लेनी है अगर चेस्ट पेन होती है। तो अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो तो बैठ के लो, अगर घर पे ले रहे हो तो लेट के लो, सो दैट बीपी जो ट्रांजिएंटली जो लो बीपी होता है, इसका इफेक्ट 10 से 1 मिनट रहेगा, बीपी दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप 1-2 ग्लास पानी के पियोगे तो बीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा, बट ये अपना काम उतना तो करेगी। सो वेजोडाइलेटरी ड्रग है। सो दिस इज एन इमरजेंसी ड्रग। अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है तो और आपके पास, आपको किसी ने एडवाइस किया हुआ है, तो यू कैन टेक दिस बट विद प्रिकॉशंस, एंड यू शुड नेवर टेक दिस ड्रग मोर देन 2 टाइम्स। एक बार लिया, आपको रिलीव हो गया, दोबारा चेस्ट पेन हुई, आपने 5 मिनट के गैप में दोबारा ले ली, और फिर दोबारा चेस्ट पेन हुई, तो रिलीव आप हो रहे हो बट दोबारा हो रही है, इसका मतलब दिस इज नॉट टू बी टेकन अगेन एंड अगेन, मैक्सिमम 3 टाइम्स, बट आई विल एडवाइस नॉट मोर देन 2 टाइम्स। अगर आपको 2 बार लेनी पड़ गई मीन्स यू गो टू इमरजेंसी, डोंट टेक दिस ड्रग, because sometime it will produce hypotension or low blood pressure to that extent कि आपको, I mean, you need to take some other injectable medication जिससे बीपी बढ़ाना पड़े आपको, और it can be complicating. So it's not a, it's a common drug,
बट डोंट कंसिडर इट टू बी सो बेनाइन ड्रग के मैं कितनी भी ले लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो एक ड्रग मैक्सिमम सेकंड, at the maximum 3, but I will not advise 3, so take maximum 2 and immediately rush to the emergency, ask It will someone. give you it will give you those 10 minutes to reach the cardiologist actually, और Yes, वहां yes, पहुंचेंगे yes, तो then they will take good care of you. So absolutely. sir, we have talked about the pericardium, epicardium, फिर हमने मायोकार्डियम की बात की, और अब खून की नसों की, मोटी वाली और छोटी वाली दोनों की बात की. मगर एक और शब्द है हिंदी का नसें, एंड दैट रिलेट्स टू न्यूरोलॉजी. एक और अगर हमने बात करनी हो बिजली की, तो अगेन डॉक्टर सुनीत वर्मा पॉइंट आउट करते हैं कि बिजली और हार्ट का भी बहुत लिंक है बॉलीवुड के गानों में. तो ये बिजली का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन द हार्ट, एंड हाउ डज ओबेसिटी इम्पैक्ट दैट? ये जो मोटापा है, ये घुस के मतलब बिजली हमारी 220 से 240 वोल्ट करता है हार्ट में, या 110 करता है, या बोथ ऑफ द अबव हो सकता है? हाँ, तो इसमें देखो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इसको इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो हार्ट की होती हैं जिसको हम रिदम प्रॉब्लम्स बोल देते हैं, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्मल हार्ट रेट और हाई हार्ट रेट और लो हार्ट रेट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जैसे कि रिदमिक इश्यूज हैं, अगर एक्सेसिवली इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाए जिसको हम टेकीरिदमियाज बोल देते हैं, तो मोस्ट कॉमन टेकीरिदमिया जो कि हम डिस्कस करते हैं विच इज वेरी कॉमन टू द ट्यून ऑफ, if there is increasing age, more than 80 years of age, almost 8 to 10% of the population will have this arrhythmia which is called as atrial fibrillation. So atrial fibrillation suddenly आता है और एकदम सडनली पेशेंट का हार्ट रेट 70-80 चल रहा है, इट विल गो टू 150-160 अकॉर्डिंगली जितना भी हार्ट सपोर्ट कर सकता है, तो 150-60 तक उसको, सो पेशेंट विल फील कि पैल्पिटेशंस हो रही हैं, बहुत तेज हो रही हैं. सो कई बार क्या है कि ये आता है अपने आप चला जाता है, कई बार आता है लंबा परसिस्ट करता है, आपको यू हैव टू विजिट द फिजिशियन. सो जिसको हम बोल देते हैं कि पैरोक्सिस्मल है या परसिस्टेंट है, बहुत लंबा चल रहा है तो परसिस्टेंट बोल देते हैं. पैरोक्सिस्मल है कि अपने आप आया अपने आप चला गया. सो बट दोनों का मतलब सेम है कि यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ tachyarrhythmia, most commonly being atrial fibrillation, but there can be other possibilities also. You have to consult the physician. So इसमें क्या है कि obesity जो है, as we discussed, जो fat deposition है, it can be occurring at the level of pericardium around the atria. So it can have a direct impact, the mechanical effect on the atria. मैंने जैसे बताया कि atria low pressure chambers हैं, तो उसको it can have some restrictive effect on the atria, thereby producing an abnormal conduction effects within the atria, or there can be deposition of the fat within the wall of the atria, thereby making micro circuits. So अगर एक ही सर्किट होगा तो वो नॉर्मल होगा, अगर मल्टीपल सर्किट्स बन जाएंगे तो हर सर्किट अपने लेवल पे कंट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. सो जिसको बोल देते हैं चाउटिक रिदम बोल देते हैं, जिसको मल्टीपल माइक्रो री एंट्री सर्किट्स बन गए हार्ट में. एंड मोस्ट कॉमनली the site of formation of these multiple circuits is where the pulmonary veins drain into the left atrium. तो वो वही साइट है जहाँ पे एट्रियल फिब्रिलेशन ओरिजिन होती है, क्लासिकल एट्रियल फिब्रिलेशन जो होती है. तो दैट्स ऑल. जो जो और दूसरा ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, ओबेसिटी हैज ए मल्टीफैक्टोरियल इम्पैक्ट ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम. सो एक तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया, बिकॉज मायोकार्डियम इज थिक, it is not relaxing properly. So this relaxation abnormality has a indirect effect on the left atrium, thereby again producing more chances of atrial fibrillation. Or patient is having hypertension which is uncontrolled, again it has got indirect effect on the left atrium. So uncontrolled obesity, uncontrolled diabetes, hypertension leading on to left ventricular hypertrophy, diastolic dysfunction, eventually leading on to left atrial abnormality, directly or indirectly leading on to increased propensity to develop atrial fibrillation. So that's how this is one of the common arrhythmia which is linked with obesity and elderly age. So more the age, obesity is there, the chances of having atrial fibrillation is more. Another important aspect which could be life-threatening sometimes is the development of sudden cardiac death secondary to ventricular tachycardias or ventricular fibrillation. So most commonly ventricular tachycardias, as the name is telling, is arising from the ventricle myocardium. So myocardium, as we have discussed previously, is affected by various reasons. भले वो coronary artery disease की obstruction की वजह से ischemia कर रहा है, या फिर myocardial dysfunction हो रहा है, या फिर dyslipidemia हो गया. So whatever reason, or there is formation of scar within the myocardium. So that all
this is a substrate to develop ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. And the studies have shown that there are higher chances of having certain cardiac deaths in obese patients. So the reason is very clear now after so much of discussion, that obesity has direct and the indirect effect on the various parts of the heart. सो डॉक्टर सिंह हमारे लिए जो पॉइंट आउट कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, एक तो ओबीज हार्ट जो है, देयर इज ओबीज कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर की तरह आता है, डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक डिसफंक्शन. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, विच कैन बी बिकॉज ऑफ द कॉर्नरी आर्टरीज और बिकॉज ऑफ माइक्रोवेस्कुलेचर बीइंग इन्वॉल्व. एंड तीसरा हमारी जो जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है हार्ट की, दैट कैन गेट इम्पैक्टेड एट द लेवल ऑफ द एट्रिया. जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है. At the level of the ventricles, ventricular fibrillation या flutter हो सकता है, and that can lead to sudden cardiac death. पता भी नहीं चलेगा भी क्या गड़बड़. एक और एस्पेक्ट लेते हैं सर हार्ट का, एंड दीज आर द वॉल्स. अब जब हम पढ़ते थे, एटलीस्ट जब मैं पढ़ता था, तो हार्ट डिजीज की परिभाषा थी, हार्ट डिजीज का मतलब था रूमेटिक हार्ट डिजीज. बल्कि जब मैं अपने एमडी के एग्जाम के लिए गया, एमडी मेडिसिन के एग्जाम के लिए, तो स्पॉटर में था एक स्कार. एक पुरुष थे जिनका स्कार था, और हमें पूछा गया ये क्या सर्जरी हुई है. दैट वाज सीएबीजी. इतना रेयर होता था कि एमडी एग्जाम वाले स्टूडेंट को पूछा जा रहा है कि ये क्या स्कार है. और अब आप किसी भी कार्डियोलॉजी ओपीडी, कार्डियोथोरैसिक ओपीडी में जाएं तो सैकड़ों में लोग होंगे विद दो स्कार्स. सो क्वेश्चन इज, व्हाट डू वेल्व्स मीन, एंड पहले वेल्वुलर डिजीज क्या थी, ओबेसिटी के साथ क्या वेल्वुलर डिजीज आ रही है? यस. सो ये एंटायरली डिफरेंट. जैसे कि हमने देखा कि हम बाहर से चल रहे थे, पेरिकार्डियम आया, फिर मायोकार्डियम आया, फिर एंडोकार्डियम आया. एंडोकार्डियम में हमने सोचा कि इसमें अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विद द एंडोकार्डियम, देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस विद इन द कैविटी. सो एंडोकार्डियम की लेयरिंग का सेकंड पार्ट है वेल्व्स. So valves is nothing, just a thick the thick tissues which are the gatekeeper between the atrias and ventricles and subsequently into the great vessels. So we have four valves between the left atrial, left ventricle, right atrium, and the right ventricle. These are called the mitral and the tricuspid valves respectively. And from left ventricle to aorta, we have aortic valve, and right ventricle to pulmonary artery we have pulmonary valve. So ये जो इनिशियली जब हम अपने एमडी और एमबीबीएस टाइम पे जब हम डिस्कस करते थे, तो द मोस्ट कॉमन इंडिया में जो वैल्व इन्वॉल्वमेंट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें कि मोस्ट कॉमन वैल्व इन्वॉल्व इज द माइटल वैल्व. एंड माइटल वैल्व में भी द मोस्ट कॉमन पैथोफिजियोलॉजिकल system which is problematic is the obstructive, the inflow problem, that is the stenosis problem. And definitely the other valves are also involved in rheumatic heart disease, the aortic valve, and then you have tricuspid, and the least common being the pulmonary valve. So any valve can be involved in the rheumatic heart disease. तो ये सबसे common disease थी, which was an infection by the streptococcal bacteria. Through the throat it will reach to the heart, involve the endothelium, involve the myocardium, and involve the pericardium. So it involves all the layers of heart. So but the residual damage remains in the valve level, so mitral being the most common. तो फिर उसके बाद हमने देखा कि ये है. और दूसरी, जब एज इंक्रीज, कुछ होती हैं जो कि बचपन से स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम कंजेनिटल वेल्व डिजीजेस बोल देते हैं, जिसमें माइटल वेल्व डिजीज भी हो सकती है. बाइकस्पिड एओर्टिक वेल्व इज अगेन अ कॉमन थिंग which is basically a congenital heart disease. फिर उसके बाद हम अगर एज 50, 60, 70s में चले जाएंगे तो डिजेनरेटिव हार्ट डिजीज आ जाती हैं, एज रिलेटेड कैल्सिफिक डिजीजेज आ जाती हैं, जिसमें माइटल वेल्व कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, एओर्टिक वेल्व कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है. सो एओर्टिक वेल्व कैल्सिफिकेशन predominantly will lead on to aortic stenosis, that is stenosis of the aortic valve. So इसमें ओबेसिटी कहाँ पे आती है? So the point is, aortic valve disease जो है, it is basically, people have found that the pathophysiology for aortic stenosis is it starts off from the atherosclerosis. एक बार एथेरोस्क्लेरोसिस जब स्टार्ट होता है तो उसमें फिर मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है, तो वेल्व कैल्सिफाई होना जाता है, लीफलेट कैल्सिफाई हो जाएंगे, लीफलेट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो फ्यूज कर जाएंगे, देयर बाई प्रोड्यूसिंग ए स्टेनोटिक इफेक्ट, सो एओर्टिक स्टेनोसिस. सो क्योंकि हमें पता है कि ओबेसिटी कॉजेज डिस्लिपिडीमिया डायरेक्टली आल्सो एंड इनडायरेक्टली थ्रू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपर. So these increased LDL level can cause atherosclerosis and early development of atrial aortic sclerosis initially,
and later on it can lead on to calcification and aortic. So aortic stenosis is one of the valvular disease which is linked with obesity, though it may not be so very common in our clinical practice. But if we start looking into it, we will definitely find a greater association, even more association of obesity with the aortic stenosis. Dr. Sharda sir points out that when we were speaking of atrial fibrillation, hyperthyroidism can also cause tachycardia, and if there is something called lone tachycardia or lone atrial fibrillation. If you can't find any other reason, Dr. Sharda is right. We must do a thyroid function test. अर्पण जी का Exactly. क्वेश्चन अभी लेते हैं. मिस्टर केके रिक्वेस्ट और मिस केके सर, could you repeat this explanation about aortic sclerosis and stenosis in Yeah. English, please, so that others can understand? So basically, the basic pathophysiology, initially we used to think that it is a degenerative, just a deposition of calcium, which is happening in the even in the degenerative aortic stenosis, which is predominantly a calcific aortic stenosis. So, but subsequently, the trials have shown that if you treat dyslipidemia in the early phase of calcific aortic stenosis. Suppose you pick up a patient with in his 50s or 60s with mild calcific aortic stenosis, and if you treat this patient with rosuvastatin or atorvastatin, you might be able to slow down the progression of that mild to moderate to severe aortic stenosis, and which is predominantly thought to be just due to the degeneration effect of the age. So there came the role of management of dyslipidemia in aortic stenosis, though it is not so well prominently used, because most of the time the patient come to us with a moderate to severe aortic stenosis only. We rarely find a patient unless you screen the patient of general population, you won't be able to find this mild calcific aortic stenosis. So in obesity there is dyslipidemia, there is increased oxidative stress there. So it is basically an endothelium. So there, the endothelium, if you can have atherosclerosis in the coronary arteries, so this the same endothelium is there on the valves also. So there can be damage and the deposition of those LDL particles and the start of the atherosclerosis in the valve. So subsequently the whole process will lead on to deposition of atherosclerosis, plaque formation, and calcium and restriction, and then aortic stenosis, the full blown aortic stenosis. So there is the concept of linkage between the obesity and aortic stenosis, with secondary to the dyslipidemic effect of the obesity. And actually, it becomes a vicious cycle, because once you get aortic stenosis, your exercise tolerance goes down. The effort that you're able to put in goes down. So maybe somebody is exercising, let's say, 30 minutes a day, and someone is able to do moderate intensity exercise. Once the aortic stenosis comes into the picture, you will not be able to exercise in moderate intensity. Your exercise quantity Exactly. and quality both will go down. Then you end up becoming more obese, having more dyslipidemia. So there is this vicious cycle which comes into being with obesity, and we need to break that. Professor Singh, a question now from everyone. We have talked so much about the challenges, but what is the solution apart from the routine therapy? And we take this point very well about using ARNI in heart failure. It's very useful. Ensuring good hemoglobin levels in heart failure patients. Nitin Narula's point was very right. Intravenous iron is used if there is iron deficiency. Let me repeat again, if there is iron deficiency, and that will help heart failure patients. Uh, but the question is, any medicines that are available now which help in both obesity and heart disease? Yes, very important aspect, which is you can say the talk of the. I mean, in the present scenario, talk is there's so many drugs which has come up recently over last few years, which has a direct impact on the management of heart failure. Rather, they have been called as the pillars of heart failure management. So, amongst number of drugs, specifically, most of the trials they focused on heart failure with reduced ejection fraction. And recently, there were trials which were discussing in heart failure with preserved ejection fraction as well. So, the most important drug in this particular category of heart failure reduced are the SGLT2 inhibitors. So, these are the drugs which have shown to affect the heart failure, decrease the heart failure hospitalization,
and the mortality as well. So, but the predominant effect in the reduction in the heart failure hospitalization, and this is more than enough. And if you see patients of heart failure with reduced ejection fraction, the most important morbid issue with these patients is they keep on coming and in the decompensated phase. And if you can decrease that frequency of admission, this is a very important endpoint for heart failure with reduced ejection fraction patients. So this is one class of drug which has shown to reduce these events, MACE events in HFrEF as well as in HFpEF patients. And another important point these drugs have, they've shown to decrease the body weight as well as. So it has got multifactorial impact. They have shown to increase the net regresses, so thereby again producing a diuretic effect. They have shown to improve the OSA, obstructive sleep apnea, which are usually linked with HFpEF patient, because we know the most common phenotype of heart failure with preserved ejection fraction is obese HFpEF patient. So if you are able to decrease the body weight, you're definitely going to improve the quality of the patient and the symptomatic status of the patient, whatever it is, whether it is HFrEF or HFpEF. So nowadays the dictum is you have one class of drug, whether you have diabetes or that non you don't have diabetes. If the patient, if you're labeling a patient as heart failure by various criteria, echo, blood, clinical or biochemical parameters, you can blindly start on SGLT2 inhibitors, looking at the creatinine clearance of the patient, the absence or presence of UTI. So definitely for every drug you have some of the points which you have to see before you start the drug. So this is one class of drug which has been studied and discussed in both classes of heart failure, reduced as well as preserved ejection fraction. Now coming up as a newer class of drug is the semaglutide and tirzepatide. These are the drugs which has been studied in predominantly in heart failure with preserved ejection fraction and obesity. So these drugs have shown to improve the quality of life in HFpEF patients by improving the weight and the 6 minute walk distance as well. So we have, I can very well see the future of these drugs in the clinical practice, though presently they have not been recommended as a class of recommend. They have not given presently the class of recommendation for HFpEF for the management, but the trials are very positive, and probably I feel that there'll be few more RCTs which will compare the effect or on the MACE events of GLP-1 receptor analogs on HFpEF patient and obesity, and we will have good results. And probably we will have some of the, apart from SGLT2 in HFpEF patient, we might have a semaglutide, and there are few molecules which are being studied in HFpEF patients also. Yes, so we have the drugs. Apart from the lifestyle or the modification, we have the drug-related management of heart failure and obesity. So if you remember the verse है वैद्य अनुपालन, the वैद्य अनुपालन is that you actually reach out. अगर दिक्कत है, एक comment आया हुआ है, you can take sorbitrate and you can take ecosprin AV as well. But those tablets will just give you that time, that 20-30 minutes to reach the cardiologist near you. So do not delay. Every minute is important. अगर heart attack हो रहा हो या heart attack का शक हो तो भी don't delay. Do go and reach out to the cardiologist. जो डॉक्टर साहब ने ड्रग्स की बात की, SGLT2 inhibitors were initially used in diabetes, now they are used in kidney disease and heart failure also. ऐसे ही semaglutide है drug which was initially developed for diabetes, now it's used in obesity, and the studies are so promising कि heart failure में भी ये फायदा करेंगी. ऐसी एक और दवा है tirzepatide. Semaglutide oral तो इंडिया में ऑलरेडी अवेलेबल है, tirzepatide अगले साल तक अवेलेबल हो जाएगी, and these are drugs which will be used not only in diabetes but also in obesity and perhaps in managing heart failure. डॉक्टर भूपिंदर, इट्स बीन ग्रेट बीइंग विद यू. ये बॉलीवुड वाली फिल्म 3 घंटे चलती है आमतौर पे, दिल की बात करते हैं, एंड में हैप्पी एंडिंग आती है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो हमने घंटा बात की, अभी तो वार्म अप चल रहा है, but what would your final comment be? Before that, let's ask Arpita. Arpita is with us backstage. She takes care of us. She and her colleagues, they take care of us, and I would like to thank the entire team from IJCP for creating this platform for us. So Arpita, आज आपने क्या सीखा डॉक्टर सिंह से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको और सिंह सर को दोनों को थैंक यू बोलना चाहूँगी. इतने इंटरेक्टिव, इतने एंगेजिंग सेशन था और सारे व्यूअर्स को इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पोस्ट किए. सो थैंक यू सबको.
फर्स्ट चीज़ तो जैसे कि ओबेस हर्ट, पहले तो लग रहा था कि क्या है ये टर्म। तो दिस रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ ओबेसिटी ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्पेशली द हार्ट। तो जैसे कि ओबेसिटी से हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस जैसे सर बोल रहे थे, हार्ट फेलियर का चांस होता है। और जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जनरली लोग आकर बोलते हैं कि ये तो हमें विरासत में मिली है, पर आपने जैसे राइटली पॉइंट किया कि विरासत मतलब मोनार्की में भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये प्रिवेंटिव है। तो आपने जैसे बताया सर कि करेक्ट फूड, व्यंजन, व्यायाम, व्याकुलता, स्ट्रेस कंट्रोल और व्यवहार, तो इन सारी चीज़ों से ये प्रिवेंटेबल है। और सॉर्बिट्रेट का जो पॉइंट सर ने किया कि डायग्नोसिस, ये काइंड ऑफ डायग्नोसिस मेथड है कि अगर कुछ ऐसा होता है, घर में हो, आसपास में हो, कोई सॉर्बिट्रेट रहता है, तो जब पेशेंट जाता है 10 मिनट टाइम भी मिलता है उनको पहुंचने में हॉस्पिटल, और तब जाके जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको भी पता चलता है कि हाँ सॉर्बिट्रेट लिया है अभी, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या हो सकती है या फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करें। तो सर ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा-थोड़ा जो भी बिट्स एंड पीसेस में मुझे पता चला है सर। थैंक यू सो Thank मच। you so much for summarizing this. Arpita, could we show a certificate of appreciation for Professor Bhupinder, please? श्योर श्योर सर। Professor Thank Singh, you. thank you so much. आप हमारे साथ थे. Thank you. People Thank logged in you. from across India. Any final comments before we conclude? So मेरा फाइनल कमेंट यही होगा, वी शुड नाउ वी हैव wealth of evidence as regard the association of obesity and various cardiovascular disorders, as we as we just discussed. When it started off so many things, and it involves most of the layers of the heart and the various cardiovascular disorders. So we should have aggressive strategy of for the risk reduction among those living with overweight and obese patient, and it should help to we should help to reduce the burden of CV morbidity and mortality in this group. So if we are treating obesity, we are preventing so many things. So again, as we started off with the prevention of so many things, so even if we are obese, if we treat obesity by various means, we have so many things to treat obesity by various pharmacological and non-pharmacological methods. So we are reducing the overall morbidity and the mortality related to the cardiovascular disorders. So, and another important thing, the clinician should diagnose obesity in people with cardiovascular disease or at risk of CVD to better allow patient-centered approach and to maximize the chance of attaining healthful body weight and reduce the cardiovascular risk. And we should not hesitate. Health professionals should discuss referral to appropriate bariatric surgery services with people who have severe obesity. So all these things has to be utilized if we want to really conquer obesity and we want to prevent the development of highly morbid and mortality producing cardiovascular disorders. It is very nice कि सब आपस में बात कर रहे हैं और सब एक साथ बात कर रहे हैं. एंड एम हमारा यही है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम अपने फेलो सिटीजन्स को बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज दें और प्रिवेंट करें हार्ट डिजीज और ओबेसिटी. और अब ऑफ कोर्स एक्सरसाइज लाइफस्टाइल तो है ही है, मगर दवाइयां भी हैं. एंड वी वुड लाइक टू थैंक अर्पिता वंस अगेन फॉर दैट एक्सलेंट समरी. डॉक्टर Absolutely. भुपिंदर सिंह को बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर भुपिंदर, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी. Thank you, sir, for giving the opportunity for this. हरियाणवी में we do not have a word for thank you. The closest we can come to is thara bhala ho, Dr. Thara Bhupinder. bhala. सबका भला हो. जय हिंद सबका भला. everyone. जय.